अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। सो क्वेश्चन है हमारे पास 3x माइनस 11 और x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट्स, इस तरह की जो फ्रैक्शन हो जिसके न्यूमेरिक फॉर्म में होगा x प्लस 3 इंटू दिस, इसको हमने कैसे ब्रेक करना है? a ओवर x प्लस 3 प्लस bx प्लस c ओवर x स्क्वायर प्लस 1। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x प्लस 3 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 ताकि हमारे पास ये डिनोमिनेटर कट जाए और हमारे पास एक सिंपल नंबर आ जाए, स्टेटमेंट आ जाए, फ्रैक्शन खत्म हो जाए। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? आफ्टर कटिंग 3x माइनस 1 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 3। Now by taking x plus 3 is equal to 0, we get value of x which is minus 3. Now put value of x is equal to minus 3 in equation 2, which is this, we get value of a which is minus 2. Now from equation 2, which is 3x minus 1, 11 is equal to x square plus a plus 3bx plus bx square plus ax plus 3c. By taking x square and x common, we get a plus b into x square plus 3b plus c into x plus a plus 3c. Now by comparing coefficients of x square of both sides, we get 0 is equal to a plus b. So we know that value of a is minus 2. So by solving, we get value of b which is 2. Now comparing coefficients of x of both sides. So we get 3 is equal to 3b plus c. We know that value of b is 2. By putting value of b, we get value of c which is minus 3. Now put values of a, b and c in equation 1. So 3x minus 11 over x plus 3 into x square plus 1 is equal to minus 2 over x plus 3 plus 2x minus 3 over x square plus 1. So question number 1 हो चुका है हमारा complete. Hopefully आपको समझ आ गया होगा. If you have any doubt, you can ask in comment section. Thank you.